Hi friends, once again you're most welcome in our YouTube channel like and research center. Friends, in this video we are going to talking about the new upcoming phone HMD Pulse. जी हाँ फ्रेंड्स, हम आज स्मॉल फोन के अबाउट में वन बाय वन उनके से कहीं ना कहीं सारे फीचर्स के अबाउट में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमें हमारे चैनल पर न्यू विजिट करें तो इनके जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फाइनली दोस्तों, इस मोबाइल फोन की अगर थिकनेस के अबाउट बात करें, जैसे कि आप लोग देख रहे हो 8.45 mm के अबाउट में इस मोबाइल फोन का थिकनेस, चूंकि अगर इसके वेट के अबाउट बात करें 187 ग्राम्स के अबाउट में वेट दिया गया है। अगर चूंकि अगर इसके डिस्प्ले के अबाउट बात करें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, डिस्प्ले इसका 6.65 इंच का इसका HD IPS में डिस्प्ले दिया गया है। चूंकि अगर वाटर रेजिस्टेंस या फिर डस्ट रेजिस्टेंस के अबाउट बात करें तो IP52 के अबाउट में इसमें वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस दिया गया है दोस्तों। आफ्टर दैट, इफ यू टॉक अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ दिस मोबाइल फोन, देन यू कैन गॉट 720x1612 पिक्सल HD में इसका कहीं ना कहीं डिस्प्ले दिया गया। चूंकि ये इसका डिस्प्ले फुल HD प्लस सपोर्ट नहीं है, बट इट इज द HD सपोर्ट। एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द refresh rate of this mobile phone, then you can got 90 hertz refresh rate of this mobile phone and 480 nits about the display brightness. And also if we're talking about this mobile phone color have been dreamy pink and motor black and also atmos blue. After that, if we talk about the version of this mobile phone, then mobile phone has been work on Android version 14. And also if we talk about the processor of this mobile phone, then you can got Unisoc T606 के अबाउट में इस मोबाइल फोन 606 के अबाउट में इस मोबाइल फोन में प्रोसेसर का सपोर्ट दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप इसके रैम के अबाउट बात करें 4GB रैम्स के अबाउट में इसका मोबाइल फोन में दिया। आफ्टर दैट 64GB के अबाउट में इसकी इंटरनल कैपेसिटी। आफ्टर दैट इसकी जो कैमरा कैपेसिटी है दोस्तों, इसका 13 मेगापिक्सल का। आफ्टर दैट कहीं ना कहीं इसका जो फ्रंट कैमरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 8 मेगापिक्सल के अबाउट में इसका फ्रंट कैमरा दिया गया दोस्तों। आफ्टर दैट इसकी बैटरी के अबाउट में 5000 mAh के अबाउट में इसकी बैटरी है। चूंकि इसका चार्जिंग के अबाउट में फुल यानी कि फास्ट चार्जिंग इसमें दिया गया है। चूंकि आफ्टर दैट अगर इसके वाईफाई वर्जन के अबाउट में 5.0 का वाईफाई वर्जन है एंड ऑल्सो 5.0 के अबाउट में इसकी BT वर्जन है। If you talk about the fingerprint sensor position, then you can got side fingerprint sensor position. It will not available on the screen. And also if you talk about the price range of this mobile phone, then you can got near about expected price of this mobile phone, then you can got 4,490 rupees in Indian rupees. And this is the expected price, not the official price. And also if you're talking about the expected launching date, then you can got 3rd July of 2024. And friends, I hope this knowledge and this specification of this mobile phone like HMD Pulse, so you feel like good. And also like our video, then please friends subscribe and also like, comment and subscribe our channel. And also friends, bye bye, see you, take care friends.